अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? शुक्रिया। अच्छा। अच्छा, हमारे इस बैच में हो जाए मुख्तलिफ फिर मैं जी, ओके। इस करंट बैच जो हमारा चल रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, पब्लिक सेक्टर से भी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग से भी हैं, सर्विस साइड से भी हैं ठीक है। इस वक्त। और एक ग्रुप है जो कि एनटीडीसी, जो गवर्नमेंट का है इंस्टीट्यूशन है, वाटर से रेलेवेंट, और जो इलेक्ट्रिसिटी की उससे। ओके, ग्रेट। जस्ट अ मिनट में आवाज को ऊंचा करता हूँ। राइट, ठीक है। राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, उन सब से हमारे पास लोग आज मौजूद हैं हमारे पास में, जो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट हैं। और मीनवाइल जी, ओके। आज की जो प्रेजेंटेशन है डेट इज वेरी मच रिलेटेड टू द एचआर, जिसमें हम क्या करेंगे, डाइवर्सिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, और इंक्लूजन की बात करेंगे। राइट। और उस में हमें जो मैम अंबर हैं, शी इज अ सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल। इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया है एज एन हेड ऑफ एचआर, और जनरल मैनेजर एचआर, और एज अ कंसल्टेंट एचआर। और अभी भी एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के तौर पर काम कर रही है। राइट। और वो इस आज के सेशन को फैसिलिटेट करेंगे हमारे साथ। मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि जब भी आप लोग आए तो खुद को म्यूट कर लिया करें, अपनी सेटिंग किस तरह करें जूम की, ताकि जब आप ज्वाइन करती हैं तो फिर बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो। और मीनवाइल आज भी प्रॉब्लम है बहुत से एरियाज में, मोबाइल फोन सिग्नल्स की, नेट की कनेक्टिविटी की, ड्यू टू मुहर्रम। तो बहरहाल लोग फिर भी ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। और जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकेंगे उनको हम आज के सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे और ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग मैम अंबर नवीद, प्लीज फैसिलिटेट द सेशन। Thank you, Mansoor Saab. Assalamualaikum everyone. My name is Amber Naveen, and as Sir Mansoor Saab, Sir Mansoor has give the introduction. I am an HR consultant and in the field of education as well. So today's topic, which is diversity and inclusion, it is very close to my heart as he just let me know that there are people from different walks of life, different professions. से हैं. But when we talk about diversity and inclusion, then it comes to all the levels of all kind of professions in which we are dealing. I will not be using my camera today because I have some connectivity issue as well. So I'm using my mobile today. So I have to switch off my camera. But in the next coming sessions, I would prefer and I would appreciate if we all open our cameras and see each other, because when we see each other, we learn better, and then there is the two-way communication. Right now, when I cannot see a face, it feels like just I'm talking to a mobile and nobody is responding. But I would like to have this session an interactive one. So please make yourself available for question answer sessions, for breakout rooms, for your own inputs and best practices. Because it's not only that I'm going to talk, I want you people to talk as well. So let's start today's session. Let me share my PPT. मंसूर साहब, I'll try. अगर मेरी स्क्रीन दिख जाता है तो वेल एंड गुड, बता, वरना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी. चलिए ठीक है, ओके, क्वेश्चन। I think it's difficult for me to share.
मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, नहीं नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं, देखते हैं इसको ना। Let me मैं try once again. ठीक है, ट्राई कर लें, फिर नहीं तो हम्म, आप इस वक्त वो हैं, आप लोग को मैंने ठहरे, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको हाँ, होस्ट बना दिया, अभी आ गई थी प्रेजेंटेशन में। अब आ गई। जी आ गई है ना, लेकिन इसका व्यू जी, बड़ा है, स्मॉल व्यू है ना। अगर आप ही से कर लें शेयर। अब सही हो गया, अब ठीक है। अब अभी ठीक हुआ था, अभी फिर वो हो गया था, अभी ठीक। कर लें, अभी अभी नहीं, अब सही है, अब ठीक है। बिकॉज मोबाइल फोन है तो इसलिए मे भी वो इसमें थोड़ा इशू होगा, बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नहीं नहीं, अब ठीक हो चलें, गया, बिल्कुल सही है ना। चलें, ठीक है। So let's start the topic. Today's topic is diversity and equal opportunity in HR. Sometimes we call it diversity and inclusion, then equality and equity. So there is a lot of difference between diversity, inclusion, equity. Equality and equity is a new term which we are using in HR. And those who know, this year the theme for different days were on equality and equity. तो उसके ऊपर भी काफी इस साल हमने बात की है, 2023 जब से शुरू हुआ है। तो इन दो वर्ड्स के ऊपर बहुत टॉक हो रही है। तो डाइवर्सिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये वो दो चीजें हैं जिसको वी ऑल एचआर प्रोफेशनल्स टेक इट एज पार्ट ऑफ आवर रेगुलर रूटीन, but only saying that we are a diverse company and we provide equal opportunity doesn't work. क्योंकि जब हम अब आप जॉब पोस्ट पे आजकल देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है that we are the company who provide equal opportunity, we are equal opportunity provider, industry or company. Such things are given on the job post as well. But are we doing that, or we are just writing it down for the sake of it? Let's talk about it today. So diversity versus inclusion versus equality. So what is diversity? Diversity, the presence of different type of people in a group of organization. It is not only gender diversity. When we say that the presence of different type of people in an organization doesn't mean that we are just talking about um, uh, gender diversity. It has a range of differences which come in this diversity. It can be a language diversity, it is a religious diversity, it is geographically able people diversity. So these are different kind of people which you have to accept in your organization to make it diverse. Gender diversity is one thing which is very common and which most of the organizations these days are working on, that that they have to provide equal opportunity to women as well. बहुत सारे पहले एक ट्रेंड होता था जो अब नहीं है, that most of the main roles are given to men. So वो लोगों lot of reasons, they had lot of reasons to say this, but now we are, when we talk about diversity and when we talk about gender diversity, to then gender diversity में ये है कि equal opportunity providers हम क्यों हैं, because हम वो ही position we can offer to a male or to a female as well. Let's talk about religious diversity. Religious diversity क्या है? That you have to accept different religions. Like for example, if you talk about Pakistan, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, different religions के लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं या हमारे मुल्क में रहते हैं, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, Jewish हैं, different लोग हैं। तो क्या हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम उनको उनकी जो भी उनका रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने की, उसके बारे में बात करने की इजाज़त देते हैं अपनी कंपनी के अंदर? क्या हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी कंपनी के अंदर? आर वी प्रोवाइडिंग देम द सेम सैलरी स्ट्रक्चर एज वी प्रोवाइडिंग टू आवर, if it is a Muslim country तो मुसलमानों को जो आप दे रहे हैं
वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो सब लोगों की होती है कि इफ द लीडर और if the leader or the I think now is the voice clear, but I have just mentioned that the voice is not clear. जी, वो आवाज में ना वो आता डिस्टॉर्शन आ रही है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है वॉइस ना, अभी बैंडविड्थ सही है? हो रही है ना। अब ठीक है, जब ये अभी आपने बात की है तो अभी ठीक है। मीन वाइल जब आप पहले बात कर रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी, तब डिस्टॉर्शन थी। अच्छा, अभी देखिएगा क्योंकि आज थोड़े से सिग्नल्स के इश्यूज हैं, तो वी आर डीलिंग विद इट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। So I was talking about gender diversity, and then I was talking about geographical and language diversity. So geographical and language diversity means when it has generally observed, then when you see people, those who speak, like for example, हमारे यहाँ पे अगर आप एक बंदा है जो पंजाबी स्पीकिंग है या एक पश्तो स्पीकिंग है, they prefer people come and join them which speak the same language. अगर वो पश्तो स्पीकिंग है तो they prefer पश्तो speaking people. if पंजाबी स्पीकिंग है तो they prefer पंजाबी speaking people. So, is it diverse? Are you giving opportunity to all kind of people with different languages? For example, if you talk about Pakistan, there are so many languages. These are languages which we have, and are you providing the opportunity to everyone to participate, to work in an organization, in our organization? Or if the official language is English, so are we only looking for people those who speak English? So there are different things. So we need to be we have to accept all kinds of diversity. Then if the organization is ready to provide a diverse culture for specially able people, जिसको हम differently able कहते हैं, like for example if someone needs some physically, he's special or he is differently able and he has some requirements. For example, अगर हमारे पास offices हैं तो क्या उसमें ramps बने हुए हैं? If someone has to use the wheelchair, is it convenient for the person to come to the office without any help and can reach to his or her office without help? So क्या हमने वो facilitation दी हुई है? Or if there is any other kind of physical requirement, or if the person who may be an autistic person or usko koi help required hai, so are we providing that help? Or what such kind of diversities are we providing them? So such things are important to make your culture, make your company diverse. We don't have to talk about gender diversity कि अगर हमने मर्द और औरतों की तादाद बराबर कर लिया तो हम कह दें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाइवर्स है। नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स तब है जब हम उसमें हर तरह की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे। So this is about diversity. Then come to inclusion. The active, intentional and ongoing engagement with diversity. डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, उनकी एक्सेप्टेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और इंक्लूजन क्या है? क्या उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इन योर इन स्ट्रैटेजी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, और क्या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना इंक्लूसिव है दैट माय वॉइस इज ब्रेकिंग, देन let me try again. ठीक है। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली आज बहुत सी जगहों पे मुहर्रम की वजह से रोड ब्लॉकेज का और इस तरह के इश्यूज थे, नेट का भी, कनेक्टिविटी का भी इशू आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पे कोई जुलूस निकल रहे हैं या कोई ऐसे इवेंट आ रहा है ना। Is my तो voice better now? जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें इस Okay. Now please bear with it.
because today we have this issue of signal, so I'll try my best that I can be loud enough that you can hear me well. Okay, so inclusion, the active and intentional and ongoing engagement with diversity. तो हमें हमारी क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्लूसिव है, जो हम कह रहे हैं उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग में, अपनी पॉलिसी डेवलपमेंट में, क्या हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो डाइवर्स कल्चर हम जिसकी बात कर रहे हैं. तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन इज are we ready for that inclusion and inclusiveness? And then equity, the fair and just treatment of all people, including the allocation of resources. Equity and equality is something which is very common. Equality means कि सबको जो है हमने equal opportunity provide करनी है. Equity क्या है? The fair and just treatment of all people, including the allocation of resources. तो इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है जो दी जाती है कि इक्वालिटी ये है कि हर एक ने जूता पहनना है टू कवर द फीट. तो इक्विटी क्या है कि हर एक को क्या उसकी मर्जी का मिल रहा है जूता जो पहनना चाहता है, या इक्विटी है कि आप क्या खाना चाहते हैं. खाना सबके लिए जरूरत है, लेकिन क्या आपको अपनी पसंद का खाना मिल रहा है. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड इक्विटी एंड इंक्लूजन. So, Mansukhsab, can you do the next slide? Yes. So diversity, inclusion. No, the previous one, please. So diversity, inclusion, and equity are three important concepts to consider when discussing DE&I initiatives. Understanding the differences between them is key to creating an equitable environment. So many of you have explained the diversity, inclusion, and equity. These are the three important things which we have to understand when we are working on. We are saying that our organization is providing a diverse culture and inclusive culture where we are equal opportunity providers and there is equity as well. So there are three, four different words which have different meanings which we provide, which we try to include in our organization structure. Can you see the slide? Okay, building awareness. Building awareness of diversity and equal opportunity is an important step in creating a more equitable workplace by understanding the challenges faced by underrepresented groups. We can create a more inclusive environment for everyone. Building awareness of diversity and equal opportunity का मतलब ये है कि when you talk about these things, are you making people aware of that, और आप अपने बंद कमरों में बैठ के किसी के ऊपर काम कर रहे हैं? You need to be aware. You need to make sure that you are aware about the importance of diversity and inclusion in the organization and what are their rights and what are you providing to them. This is very, very important to create this awareness. By understanding the challenges faced by underrepresented groups, we can create a more inclusive environment for everyone. अगर हम इन चीजों को एड्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे और सबको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, so we will have a better and inclusive environment of the organization. Next slide. A timeline of diversity, equal opportunity and inclusion advocacy. In 1960s, civil rights movement थी. 1960s में कहाँ से शुरू हुआ? Civil rights movement start हुई. Then 1970s, Equal Employment Opportunity Commission was established. 70s की बात हो रही है जब ये कमीशन स्टार्ट हुआ था इक्वल अपॉर्चुनिटी का. आप सब लोगों ने सुना होगा कि 70s and 80s में स्टार्ट हुआ था from America that जिसे लोग इसको ये भी कहते हैं जिसे आप विमेन मार्च कहते हैं या औरत डे का मार्च कहते हैं. ये भी पार्ट ऑफ दैट
इसी का एक हिस्सा है जब 1917 में ये एक एक तरीके से उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खवातीन को और मर्दों को बिकॉज ऑफ दी डिफरेंसेस ऑफ सैलरी। क्योंकि मर्दों को एक तो जो सीनियर रोल होते थे या मैनेजरियल रोल मर्दों को दिए जाते थे और साथ ही उनको सैलरी ब्रैकेट जो था हाई किया जाता। इसी तरह खवातीन को बहुत सारी चीजों में आगे नहीं लाया जाता था और उनका सैलरी ब्रैकेट लो रखा जाता था। फिर when they are in childbearing age, जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो उनको जॉब क्विट करने पड़ते थे, कोई उस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती क्योंकि मदर कैन वर्क equally with the men while they are taking care of their young children. 1970 से ये एक तहरीक शुरू हुई है। Then 1980 American with Disabilities Act. डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब ये है कि इससे पहले तक अब आप देखिए डिसेबिलिटी एक्ट, अब हम उसको डिसेबल भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं उनको डिफरेंटली एबल बोलते हैं। तो ये डिसेबिलिटी से शुरू हुआ, फिर उसके बाद स्पेशल नीड हो गया, फिर स्पेशल लोग हो गए और अभी द न्यू वर्ड फॉर सच पीपल इज डिफरेंटली एबल पीपल। उस वक्त इसको डिसेबल कहा जाता था, तो डिसेबिलिटी का एक्ट उस वक्त 1980 में अमेरिका में पास हुआ था। और अमेरिका में अगर 80 में हुआ था तो हमारे पास तो आते आते बहुत टाइम लगा। लेकिन क्योंकि हम एचआर की बात करें, एचआर इज अ वेरी न्यू फील्ड, इट्स ओनली 22 years back when this keyword started coming up. इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते थे वो ही ये सारा काम करते थे एचआर का, कुछ स्पेसिफिक एचआर अलग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता था। तो ये शुरू तो 1960 से हुआ, लेकिन इसको सरफेस पे आते आते 2000 हो गया जब ये सरफेस पे आया और इस चीज को की इम्पोर्टेंस बढ़ने शुरू हुई। फिर 90s में क्लास सीलिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड, ग्लास सीलिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड, देन 2000 में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स बिकम मोर commonplace in corporate America, and 2010 में diversity, equality and inclusion become a priority for many organizations. और 2020 में इसके साथ क्या आ गया, 2020 में diversity inclusion ने flexibility साथ ऐड कर ली। तो next thing is agility in HR. तो 2020 में agility and flexibility came in HR as well. So this is one thing how it started. So if you see the slide, सिविल राइट से शुरू हुआ, उसके बाद इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर आए, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ, देन ग्लास सीलिंग एंड देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड देन DE&I become a priority for many organizations, and now it is agility in HR. Next slide. Diversity and equal function deals with the qualities, experiences, and work styles that make individuals unique. For example, age, race, religion, disabilities, ethnicity, as well as how organizations can leverage those qualities in support of business objectives. It also includes matters that focus on diversity-related careers, communications, legal and regulatory issues, technology, matrix, outsourcing, effective diversity practices, and global diverse issues. इस एक ओवरव्यू के अंदर हमने बहुत सारी बातें कर दी हैं, तो इसको अगर हम डिस्कस करें दैट व्हाट इज द राइट थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, द राइट थिंग इज दैट डाइवर्सिटी में हमने भी जो चीजें डिस्कस की उसमें एज, क्या डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इस आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, रीजन क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट एज ग्रुप, सो वी शुड नो द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग officer and a middle age and the one who has a good work experience of 30-35 years. So it should be a blend of different age groups if you want your organization to work better. And then race, so हम racist तो नहीं है लेकिन हम हैं भी,
So we have to see the racism and religion, and then disability and ethnicity. ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं, and as well as no organization can leverage those qualities in support of business objective. कोई भी काम हम कर रहे होते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम काम करें, इन द एंड हमारा मेन गोल तो बिजनेस डेवलपमेंट है. So if your business is developing in a right phase or a right track, or the growth is there, then इसका मतलब ये है कि the things are in control. So whatever we are doing, whatever we are working to make the culture जिस तरह का भी हम बनाना चाहते हैं, हमारा end purpose ये है कि we should provide business. We should work for business development. आपका business develop करे, आपकी growth हो, and there should be more earning from in the business which can be given to the employees. And it also includes matters that focus on diversity related careers, communications, legal and regulatory issues, technology, matrix, outsourcing, effective diversity practices, and globally diverse issues. तो ये सारी चीजें जो हैं, जब ग्लोबली डाइवर्स इश्यूज को क्या हम एड्रेस कर रहे हैं, क्या या हम फिक्स माइंडसेट के साथ काम करें कि जो हमने सही लग रहा है उसी पे करेंगे. हम ग्लोबली जिस चीज की तरफ जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे, तो इज दिस राइट वे टू डू इट, और वी हैव टू वर्क ऑन इट. सो दीज आर द थिंग्स which is important for making your company a diverse one. Can we have the next slide, please? So diversity has many definitions. Organizations frequently adapt diversity has many definitions. Organizations frequently adapt the definition to their specific environment. Generally, diversity refers to the similarities and differences among individuals, accounting for all aspects of their personality and individual identity. This is what we have already discussed. Can I have the next slide, please? Diversity, recruitment, and sourcing. Diversity recruitment means companies recruit individuals with a collective mixture of differences and similarities that include individual characteristics, values and beliefs, experiences, and backgrounds. Diversity recruitment is an important step towards creating an inclusive workplace that is reflective of the customers it serves and best prepared to compete in a changing economy and marketplace. Just to explain what is diversity recruitment and sourcing. Diversity recruitment means companies recruit individuals with a collective mixture of differences. Like आप एक शख्स को अगर हायर कर रहे हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक क्वालिटी के साथ साथ और कितनी क्वालिटीज हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जरूरत है एक डॉक्टर को हायर करना, तो एक डॉक्टर ने अगर एमबीए की है तो वो आपके लिए ज्यादा फीजिबल है कि वो मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा और जो उसका मेन काम है वो भी करेगा. इसी तरह डिफरेंट workforces and different requirements हैं. But when we talk about diverse recruitment, इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो है वो एक से ज्यादा काम कर सके. And the world is moving towards diversity and diverse recruitment. कि आप when you have to cut down on these salaries, you have, or if you want to have a best of a best, then you would like to have a person who has more than one quality to work for the organization. सिर्फ एक चीज मल्टीटास्कर होगा, तो हम उसकी रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे. एंड देन differences and similarities that include individual characteristics, values and beliefs, experiences and backgrounds. Diversity recruitment is an important step towards creating an inclusive workplace that is reflective of the customers. It serves and best prepared to compete in a changing economy and marketplace. Over here now, I would like, sir, how many students we have today? Participants, sorry. अराउंड है तकरीबन 10 है इस टाइम पे ना. अभी मुझे मैसेज आए कई लोगों के कि वो ट्रैवलिंग में हैं और वो शायद ज्वाइन ना कर सकें आज भी ना इस वक्त. participants breakout so we can do an activity. ओके.
अच्छा जी, ब्रेकआउट से पहले अपनी एक्टिविटी को ब्रीफ करना है तो ब्रीफ कर दें, ताकि फिर हम उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करें। असल में इस वक्त 11 लोग भी हो गए, जिसमें से 2 लोग तो हमें, ठीक है। तो आप चाहते हैं ब्रेकआउट रूम करें या हम ऐसे ही इसी में कर लें? ऐसे ही कर लें, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे ना, फिर इन तक रिकॉर्डिंग नहीं पहुंच सकेगी ना, ब्रेकआउट रूम की रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, अच्छा तो ठीक है। ठीक है इस So okay, the group, one of you has to become the group leader, and then the target or the task what I want to give you all is that you have to recruit a diverse person for for a company like management skill company। आप देख ले हमारे पास ज्यादा लोग कौन सी कंपनी से हैं, so that relevant हो ज्यादा, कौन सी इंडस्ट्री के लोग हैं? जी, बेसिकली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, एनटीडीसी, वहाँ से लोग हमारे साथ इस वक्त ज्यादा हैं, और फार्मास्यूटिकल से लेकिन एनटीडीसी से ज्यादा लोग हैं ना। अच्छा ठीक है, हम एक रेगुलर उसमें कर लेते हैं कि आपने एक मैनेजमेंट रोल है, उसके लिए आपने रिक्रूटमेंट करनी है, बट जिसमें एक टेक्निकल काम लाइक आईटी इंडस्ट्री हम ले लेते हैं कि आपको एक आईटी मैनेजर चाहिए, बट यू वांट टू हैव अ डाइवर्स पर्सन, और डाइवर्स रिक्रूटमेंट क्या होती है। तो ऑल ऑफ यू फर्स्ट टॉक थिंक अबाउट इट कि डाइवर्स रिक्रूटमेंट है क्या, एंड यू हैव टू हायर अ पर्सन who who whose title would be manager IT, बट डाइवर्स। जब आप करना चाहेंगे रिक्रूटमेंट तो आप उसके अंदर ये एक स्किल तो उसकी टेक्निकल स्किल है, उसके साथ आप क्या चीजें देखेंगे और क्या बेस्ट होगा कि आप ऐसा बंदा हायर करेंगे जिसे आप कह सके कि डाइवर्स रिक्रूटमेंट किया है हमने। So we have to hire a person whose title would be IT manager for a company, IT company, but we want to have a diverse recruitment. So what other skill would you as a group would see that should be there in that person, that in the end we can call that we have a diverse recruitment. For this activity, I'm going to give you 10 minutes. So let's start the discussion on this. जी, अच्छा, इसमें ऐसा है कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एचआर से रेलेवेंट लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, रोल सेम है एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको ये कहते हैं कि अब जैसे एनटीडीसी में भी आपको आईटी मैनेजर को हायर करना है, और आपको आईटी का इतना ज़्यादा पता नहीं होता ना, ठीक है, और हाई नून फार्मास्यूटिकल के अंदर भी आपको आईटी मैनेजर या आईटी के लोगों को हायर करना होता है, तो आप उसके बारे में टेक्निकली इतनी ना हो आपको नहीं हो रही होती ना, तो यहाँ पे फिर आपने डाइवर्सिटी के जो वो है फंक्शन है, इस तरह को उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जी एहतशाम, आप क्या पूछना चाह रहे हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें जो एक चीज़ ऐड करेंगे लाइक जैसे डाइवर्सिटी रिक्रूटमेंट मैनेजर आईटी, तो इसमें सर डाइवर्सिटी इस सेंस में भी आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक जो इंडिविजुअल्स जिसको आप हायर करने जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग में भी हो, उसका एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे भी हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, और वो कंप्लाइंस को 100% मेक श्योर करवा सके, और कोऑर्डिनेशन विद द अलाइड डिपार्टमेंट्स जहाँ पे उसने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह और डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड्स करनी है, ये उसकी कोऑर्डिनेशन का रोल उसमें हो, लीडरशिप स्किल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उसका नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग्स में उसका नॉलेज हो। तो आई थिंक इस तरह से हम एक डाइवर्सिटी रिक्रूटमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। जी, इसमें आप मल्टीपल फैक्टर्स देख सकते हैं। Can I add my 2 cents? जी, यू यस प्लीज। Acha, what I would go for is that since I am based in the federal capital, तो मैं social diversity की तरफ जाऊंगी. I can focus on hiring someone who's from remote areas. So basically I can go towards Balochistan, और अब वहाँ से काफ़ी अच्छे individuals, पढ़े लिखे individuals आ रहे हैं, और I can go towards KPK, and then I can target women or even transgender. So
I will try to create that sort of like skills वाली diversity एक अलग चीज होती है, और जो हम एक organizational diversity की अभी बात कर रहे हैं, that is based upon कि वो उसके race, color, creed, जो marginalized sectors हैं हमारी society के, उनमें से मैं choose करने को prefer करूंगी। ग्रेट, बिल्कुल ये भी एक है। देखिए एहतशाम, जो एक पॉइंट आपने रेज किया ना, मैं वहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस की, बात की, ये तो हम समझते हैं ना कि एक आईटी मैनेजर के लिए प्रीरिक्विजिट हैं, इनका होना तो लाजमी है, तभी तो हम उसको हायर कर रहे हैं ना। वो प्रोग्रामर्स को भी देखेगा और दूसरे लोगों को भी देखेगा जो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और जो भी स्पेशलिटीज होती हैं, पाइथन लैंग्वेजेस और जो कुछ भी होता है ना, उन सबको देखेगा, क्योंकि उसने टीम को लीड करना है, अपने सपोर्ट की टीम को ना। तो इनको तो जो फैक्टर आपने डिस्कस किए हैं उनको हम प्री रिक्विजिट समझेंगे, लेकिन जो अभी सिमल ने डिस्कस किए हैं, ये चीज डाइवर्सिटी में आ जाएगी ना। ठीक है, वो तो टेक्निकल स्किल्स होंगी जो भी आप बात कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से सिमल का पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने किया है, वो ज्यादा नरेट करता है डाइवर्सिटी को भी और इंक्लूजन को भी। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, जब भी हायरिंग होती है, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस था कुछ दिन पहले, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है विल्सन की। आपको पता है बच्चे जो पैदाशी तौर पे डेफ हों, वो बोल भी नहीं सकते ना, तो उनके अंदर एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको कोक्लियर डिवाइस कहते हैं। वो वहाँ पे एक ऑफिसर थे इंजीनियरिंग के अंदर, जिनको कोक्लियर डिवाइस लगी हुई थी, और वो काफी अरसे से 50,000 रुपए के ऊपर काम कर रहे थे, तकरीबन 7 साल से। ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब उनको बात समझने में और सुनने में मुश्किल आ रही थी उस डिवाइस के बावजूद। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे समझते हैं बात। उन्होंने कहा कि मैं बात को, आपकी जो लिप रीडिंग है, मैं उससे बात को समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ मुझे अल्फाज समझ में आते हैं, लेकिन अगर कोई ऑडियो वीडियो, कोई इस तरह का मैसेज आ रहा हो, सब टाइटल ना हो, तो मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, तो वो उन्होंने बताया कि मैंने बड़ी मुश्किल से, हालांकि वो इंजीनियर थे मैकाट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, और उन्होंने यूईटी से इंजीनियरिंग की, ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर। तो लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही थी, और एक ही जगह पे थे, और इतने, जबकि इतने कम सैलरी में आप गुजारा नहीं कर सकते इस्लामाबाद जैसे सिटी में। तो वो अब कोई और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे, वो अमेजोन के कोर्स के लिए हमारे पास आए थे। मेरी उनसे डिस्कशन हुई, तो मुझे ये लगा कि ये भी एक डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का केस है, कि इनको इंक्लूड तो कर लिया गया, लेकिन इनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, इनको समझने की बस तरस खा के रखा गया वहां पे, और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर करने के लिए वो लोग ही नहीं मौजूद यहाँ पे जो उसको, उन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस तरह के डाइवर्सिटी के बड़े केसेस हमें देखने में मिलते हैं। अभी देखें, 50+ लोगों को लोग हायर करने से हेजिटेट करते हैं। ये एक ट्रेंड है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, एज की डिस्क्रिमिनेशन आ गई ना, तो ये भी डाइवर्सिटी है कि आप इनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, और फिर जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, उनको जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, यंगस्टर्स के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो भी डाइवर्सिटी को की एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी इंक्लूजन नहीं है ना। तो इन चीजों को इस तरह समझने की जरूरत है कि जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करें, तो एज, रेस, सेक्स, जेंडर, जितनी भी चीजें हैं, इनको मलहूज़े खातिर ना रखें, मद्देनजर ना रखें। हो सकता है अब एक और ये भी इंक्लूजन नहीं है, काफी अर्सा पहले ये ट्रेंड था, और अभी भी बहुत सी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल के अंदर ये ट्रेंड है कि जो IBA और लम्स के ग्रेजुएट को रखते हैं। ठीक है जी, और हर बंदे की ये इस्तात नहीं होती, हर बंदे की वो ये होता है नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो लम्स या IBA में जाके MBA कर सके या कोई और डिग्री कर सके। तो लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ है, अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब उन लोगों को भी, जो सेकंड ईयर की यूनिवर्सिटीज हैं, थर्ड ईयर की यूनिवर्सिटीज है, आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिसिज्म के बाद उनको भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया गया है। बड़ी बड़ी जो मैं आपको बात करूंगा, जैसे एंग्रो है, यूनिलीवर है, नेस्ले है, ये लोग, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हालांकि इनको तो डाइवर्सिटी को फॉलो करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया ना। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डाइवर्सिटी का कंसेप्ट हम इस सेंस में लेते हैं। राइट जी, एहतशाम, आपका हैंड रेज है, आपको बात करना चाह रहे हैं, प्लीज।
जी। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है ना, मैं बताऊं, मैं एक एचआर में था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एचआर में मैं था, तो वहां पे हम एक दो लोग ही थे जो कि मेल थे। बाकी को तकरीबन 10 से 12 लोग, टोटल एचआर की टीम, 3 स्ट्रीम थी, कॉर्पोरेट एचआर, शेयर सर्विसेज एचआर और बिजनेस एचआर ना। अब हर एचआर के अंदर मेल तो मिलते ही नहीं थे। अब उन्होंने डाइवर्सिटी के नाम पे, यानी कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के नाम पे, इतनी ज्यादा फीमेल की रिक्रूटमेंट कर दी उन सारे के सारे एचआर के अंदर, कि वहां उन लोग ये बात करते थे कि आपको तो खुद डाइवर्सिटी की जरूरत है, कि आपके डिपार्टमेंट में तो मेल मेंबर्स हैं ही नहीं। तो ये भी एक फॉर्म है ना डाइवर्सिटी की। ऑर्गेनाइजेशन पूरी के अंदर मेल ज्यादा थे, फीमेल कम थी ओवरऑल ना। 5-6-7 हजार लोगों में बात करें, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे 6-7 हजार लोग काम करते थे, सब मिला के, और सारे बिजनेसेस में ना। लेकिन जब एचआर डिपार्टमेंट की बात करते थे, तो वहां पे फिर डाइवर्सिटी मेल के हिसाब से, कि मेल को इंक्लूड करने की डाइवर्सिटी की जरूरत थी, एक्सेप्ट करने की जरूरत थी, उनके इंक्लूजन की जरूरत थी ना। तो ये भी होता है कि हम किसी एक चीज के पीछे लगते हैं, तो फिर बस फिर सोचते नहीं कि हमें इसमें भी कोई बैलेंस लेके आना है, तो वो उस बैलेंस की भी जरूरत है। जी। हेलो। जी जी, बोलिए एहतशाम। जी सर। सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, लाइक अभी जो मैंने करंट टाइम के अंदर एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, लाइक हमें ज़रूरत होती है फार्मासिस्ट की। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में कैंप्स किए थे। वहाँ पे अगर हम देखें तो 90% फीमेल्स जो हैं वो क्लास में थी। मतलब मेल कैंडिडेट, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने एक एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पे 55 की क्लास में टोटल 6 जो मेल कैंडिडेट थे, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स थी। तो ये भी डाइवर्सिटी में आता है कि हमें बहुत इश्यूज आते हैं कि फार्मासिस्ट मेल कैंडिडेट, क्योंकि 24/7 आपका प्लांट ऑपरेशन चल रहा होता है, तो आपको नाइट शिफ्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होते हैं फार्मासिस्ट। तो ये वाला पॉइंट भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो इरिटेट। तब फिर हमने कोशिश की, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जैसे लाहौर यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिफा इंटरनेशनल, या मल्टीपल जो एरियाज़ की यूनिवर्सिटीज़ लाइक केपी से हमने बंदे लेने स्टार्ट किए, मुल्तान से हमने बंदे BZU से स्टार्ट किए। वहाँ से हम फिर फार्मासिस्ट को हायर करते थे, मेल कैंडिडेट्स। तो ये वाला पॉइंट भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो इरिटेट कर रहा था रिसेंट टाइम के अंदर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फार्मास्यूटिकल फर्म्स को हम देखें ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में फीमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली एडमिशन मेरिट पे होता है, और फीमेल स्टूडेंट को ये देखा गया है कि वो बड़ी यानी कि दिल लगा के पढ़ती हैं, और उनकी मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, उनकी पोजीशन भी ज़्यादा आती हैं, उनके हार्ड वर्क की वजह से ना। तो अगर मेरिट पे तो एडमिशन होंगे, तो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे फीमेल ही ज़्यादा नजर आएंगी, MBBS वगैरह में, या इसमें ना, जो आप फार्मेसी की बात करते हैं, क्योंकि जो MBBS में जिनका एडमिशन नहीं होता, या BDS में नहीं होता, तो ये एग्रीकल्चर की तरफ चले जाते हैं, या फिर फार्मेसी की तरफ चले जाते हैं ना। वहां पे भी एक ट्रैक होता है कि उधर से भी वो डॉक्टर के बराबर हो जाएं, कुछ कोशिश करके, ऐसा होता है। ये फार्मास्यूटिकल में ये बड़ा चैलेंज है जो आप बता रहे हैं, कि नाइट शिफ्ट है, 24/7 है, बजट अचीव करना है, प्रोडक्शन के टारगेट अचीव करने हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिटी की बहरहाल हर जगह में ज़रूरत होती है, और डाइवर्सिटी के लिए हमें फिर वो यानी कि इस तरह के मैयर्स लेने की भी ज़रूरत है, क्या, जिनकी वजह से वहाँ पे यानी कि इंक्लूजन आ सके, हर तरह के लोगों को हम इंक्लूड कर सकें। जी। यहाँ पे कोई और भी हैं जो कि डाइवर्सिटी के ऊपर, कोई और पार्टिसिपेंट जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें डाइवर्सिटी के ऊपर, जैसे। I'm sorry, sir. I want to add one thing. श्योर, प्लीज। सर यहाँ पे डाइवर्सिटी की जो बात हो रही है, बीइंग एसोसिएटेड विद IT सेक्टर, जो IT मैनेजर की हायरिंग है, IT मैनेजर की, एक्सेप्ट देयर टेक्निकल साइड, डाइवर्सिटी की जहाँ तक बात है, तो हमें IT की फील्ड में अगेन एहतशाम साहब वाली बात कि हमें थोड़ा सा मुश्किल आती है व्हेन इट्स कम टू द स्किल साइड्स, क्योंकि जो
और हो तभी it was my practical experience that I have received resumes 90% from the male side. तो हमने वहाँ पे प्रेफर ये किया कि हम वहाँ पे फीमेल IT मैनेजर को रखेंगे because we have received I guess 3 or 4 resumes. So diversity वहाँ पे एक्चुअली सर्व ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा देखी जा सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को ज़्यादा मैटर करती हैं. मोस्टली स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे जहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं, मोस्टली इन ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ नहीं देखी जाती. इवन IT सेक्टर में 90% मेल होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल और अदर जेंडर. जी बिल्कुल, आप ऐसे ही कह रहे हैं, आपने ठीक कहा. वाकई आईटी में तो ज्यादातर कंसंट्रेशन उन्हीं की होती है, मेल की होती है. तो बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे फाइन आर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन फीमेल की होती है. फार्मासिस्ट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे फिर फीमेल ज्यादा होंगी. Sir, तो I would like to add something कि इसके लिए what we can do is कि we don't have to go for a 50-50 ratio ना. हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां हमारे पास 95% मेल एम्प्लॉयज हैं और ओनली 5% फीमेल है, हम उस 5 को थोड़ा सा एक्सपैंड करके 8 to 10 पे ले आए. समहाउ हमारा कुछ डाइवर्स ग्रोथ जरूर हो हमारी पूरी डिपार्टमेंट की, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट की. जरूरी नहीं है कि अब आईटी में अगर कम लड़कियां होती हैं तो हम 50-50 पे जाने की कोशिश करें. अनरियलिस्टिक गोल्स तो वैसे भी एज एन एचआर आपको सेट नहीं करने चाहिए. जी बिल्कुल, सिमल आपने ठीक कहा. हमें ना वो जस्टिफाई करने के लिए चीजों को करना पड़ता है. ये इसी को इंक्लूजन कहते हैं. आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते जो आप समझते हैं कि बराबर बराबर लोग हो जाए ना, वो होता भी नहीं है, मिलते भी नहीं है ना उस तरह से ना. क्योंकि कुछ रिचुअल्स हैं और जो चीजें चलती चली आ रही हैं कई सालों से, तो वो फिर हमें मुश्किल होता है कि हम चीजों को चेंज करें. तो आहिस्ता आहिस्ता अभी देखिए फीमेल इंजीनियर भी बन रही हैं, लड़कियां इंजीनियर भी बन रही हैं. पहले नहीं बन रही थी ना, पहले सिर्फ आती नहीं थी, इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाती सब नहीं आई थी. वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर नाउ. मैंने आप लोगों की सबकी कॉन्वर्सेशन सुनी है, एंड द थिंग व्हिच अगेन जब भी हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो इन द एंड हम खवातीन की तादाद पे चले जाते हैं कि हमारे पास कितनी खवातीन होनी चाहिए, उनके लिए कौन सा प्रोफेशन सही है और कौन सा नहीं है. But I would suggest I do agree with Simal that she said that there should be diversity should be not only in gender. आप सोसाइटी की उन चीजों को फोकस करें जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं है. जिसमें एक सबसे बड़ी चीज स्पेशली, जैसे अभी ये मैंने एक टारगेट दिया था कि हमने आईटी के लिए एक रिक्रूटमेंट करनी है, तो हैव वी डिसाइडेड समवन कि हम कैसा बंदा रिक्रूट करेंगे इन दिस डिस्कशन. Can one of you tell me that after this discussion, have you decided that what kind of person you are going to hire for as an IT manager, which you say that is a diverse recruitment? Any one of you please explain. इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि हम एक कंक्लूजन पे आए. देखें, जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें कंक्लूजन भी करना चाहिए. तो एनी ऑफ यू हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट, इट्स नॉट, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग व्हेन वी आर डूइंग डिस्कशन. इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता. बट आफ्टर दिस डिस्कशन आप कैसा एक बंदा हायर करेंगे कि जिसको आप कहेंगे कि आपने डाइवर्स रिक्रूटमेंट की है फॉर एन आईटी मैनेजर. जी सिमल, इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना. आपने भी इस इंक्लूजन के हवाले से बड़ी बात की थी डिटेल से. आपने 2-3 लोगों ने किया है. जी जी बिल्कुल. Yes, like I said that I would obviously even if it's a man, so what we believe, what I feel is wrong is कि अगर हम मर्द को हायर कर रहे हैं तो वो इंक्लूजन या डाइवर्सिटी नहीं है. दिस इज सिर्फ औरत पे डाइवर्सिटी नहीं आती. I can go for someone from a different age group, or someone, for example, in our institute we have a person from West Indies who's working, so I can go either for that or someone from, if in my department I would see अगर IT department में ज्यादातर लोग are older age people, I can go for someone who's young. That would be a change for the people as well, that they'll be working under someone who can come up with fresher ideas. So there's no one definition कि मैं ऐसा ही बंदा या ऐसी ही लड़की को choose करूंगी, but I would definitely like to play with the odds.
जी बिल्कुल ठीक है। एहतशाम आप मौजूद हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें कि आपके कंक्लूड नेक्स्ट करके हम सब आगे चलते हैं. ठीक है। If I would suggest that if I have to hire IT manager, which I can say that I've done a diverse recruitment would be, जो सारे टिक्स हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज के वो तो रिक्वायर्ड हैं. दैट इज नॉट दैट डजंट कम इन डाइवर्सिटी. वो तो उसकी रिक्वायरमेंट. डाइवर्स कैसे होगा? As it was discussed that if the team is of an older age, older generation, you can break somebody young who has a different skill, maybe a good communication skills, क्योंकि जो IT के लोग होते हैं उनकी communication skills normally written ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो a good verbal communication skills, maybe a person from a different background, ethically sorry authenticity उसकी या उसकी religiously उसका different background हो, ethnicity उसकी different हो, language different हो, but क्योंकि आपने सबसे पहले तो उसका स्किल जो देखा है, वो जो नॉलेज स्किल तो आपने टिक कर दिए, उसके बाद आपने डाइवर्सिटी पे जाना है. तो इफ यू हैव ऑप्शन टू हायर 3 डिफरेंट पीपल, एक वो शख्स है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग आपके पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सेम माइंडसेट है, सेम बैकग्राउंड है, एंड एवरीथिंग इज सेम. एक वो है जिसमें कल्चरली डाइवर्स है, रिलीजियसली डाइवर्स है, नॉलेज हैज द सेम. और एक है जो जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, बट द स्किल विच यू नीड इज देयर. लाइक अगर वो आईटी मैनेजर की जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है, उसके साथ इज अ गुड कम्युनिकेटर. अगर आपके मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, coming from a different background, maybe if you're sitting in Islamabad and the person is coming from Quetta, Balochistan, and he has a different language and he has a different lifestyle. So if you bring that person, he might bring a lot of energy and positivity in your department and in general in your company. Then you can say that you have hired a diverse, you did a diverse recruitment in which they are multitasker as well as multitasking. They brought a lot of different positive things of positivity in the organization and in your um, uh, in your group as well. So this is how we can make the recruitment more diverse. So let's now go back to our presentation. Can we have the next slide, please? Equity. Equity in the workforce refers to the fair treatment in excess, opportunity and advancement for all individuals. Work in this area includes identifying and working to eliminate barriers to fair treatment for disadvantaged from the team from team level to strategic to systematic changes in organizations and industries. Affecting change through an equity has generally requires an understanding that the societal system in which we currently work are not equitable and that those inequities are reflected in our organization. ये एक जनरल बात की जा रही है कि equity in the workforce refers to fair treatment. Fair treatment के जैसे मैंने आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया था कि भूख लगी है, हम सबने खाना खाने खाना इज अ नीड, वो सबने खाना है. लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी है कि वो अगर आपको खाने में चावल पसंद है तो वो आपको चावल दे रहे हैं, अगर आपको खाने में ब्रेड पसंद है तो क्या आपको वो दे रहे हैं? तो एक्विटी कहाँ आती है? जब आप पर्सनलाइज जाके या आप उस बेसिस में बात हो रही है कि equity lens generally requires an understanding that the societal system in which we currently work are not equitable and that those inequities are reflected in our organization. कि हमें पोजीशन ऑफर हो जाती हैं, आपको जॉब चाहिए, जॉब आपको मिल गई, क्या ये देखा जाता है कि क्या आपकी प्रेफरेंस उस जॉब में कौन से एरिया की है, कौन सी जगह की है, कितना कौन सा टाइम आपको सूट करता है? मे बी यू वांटेड टू हैव अ फ्लेक्सिबल टाइमिंग, मे बी यू वांट टू हैव अ नाइट शिफ्ट, मे बी यू वांट टू हैव अ मॉर्निंग शिफ्ट, maybe you want to have office which is sunny, or maybe you want to have a darker office, whatever your requirements or your preferences are.
So equity comes when when the organizations are ready to go for the preferences of the employees that which is required from them. So सिंपल इसको समझने का तरीका यही है कि हम सब ने खाना खाना है, लेकिन क्या हमारी कंपनी हम सबके लिए वो खाना ऑफर कर रही है जो हम खाना चाहते हैं, या एक ही खाना है जो सबको खिलाया जा रहा है। तो इस चीज के ऊपर हमें मेहनत करनी है, काम करना है, इक्विटी के ऊपर काम करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, और इक्विटी लेकर आना इज नॉट इजी। इक्वालिटी की बातें तो हम कर सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, इक्विटी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और फिर वर्क इन दिस एरिया इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड वर्किंग टू एलिमिनेट बैरियर्स टू फेयर ट्रीटमेंट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। फेयर ट्रीटमेंट और डिसएडवांटेज ग्रुप, कौन सा आपका डिसएडवांटेज ग्रुप होता है? बहुत सारे बाइसेस होते हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं, एंड बहुत सारी कंपनीज में मैनेजर्स की अपनी कुछ फेवरेट लोग जी, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। जस्ट अ मिनट, आई सी, जस्ट अ मिनट, लेट मी एडमिट हर। हाँ जी, दोबारा आ गई। तो सॉरी, मेरा इंटरनेट चांस ब्रेक हो रहा है बार बार, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोई इशू नहीं है, ओके। तो वो क्या हम उन एडवांस के लिए क्या हमारी कंपनी काम कर रही है फ्रॉम द लेवल थ्रू सिस्टमैटिक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री। तो इक्विटी के ऊपर काम करने से पहले इक्विटी को समझना जरूरी है। ये बहुत सारे शीक वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जी हमारी कंपनी जो है वो इंक्लूसिव है, डाइवर्स है, इक्विटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट उन सबको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इक्विटी है क्या। तो सिंपल वे मैंने आपको इसको समझा दिया है कि ऐसा है कि क्या आप जो एम्प्लॉय है, क्या वो एम्प्लॉयर से उसकी प्रेफरेंस पूछ रहा है, क्या उसकी प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो जब हमारी कंपनीज इतनी, जैसे अभी वेस्ट में या बहुत सारी जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें आपको ऑप्शन दी जाती है व्हेन यू गो फॉर वर्क, मे बी आप डू यू वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम और यू वांट टू कम टू द ऑफिस, दैट्स योर प्रेफरेंस। वो आपको टास्क देते हैं, यू हैव टू अचीव द टास्क, बट टास्क को अचीव कैसे करना है वो बहुत सारी प्रेफरेंस आपके पास है कि वेदर यू वांट टू डू इट in a traditional way or you want to do it in a flexible way. So here comes the HR agility as well. क्योंकि जब हम HR agile की बात करते हैं तो फिर agile क्या होता है? agile का मतलब ये है कि हम जो एम्प्लॉयर है वो तो चीज प्रोवाइड कर रहा है, बट एम्प्लॉय को कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि वो उस टास्क को कंप्लीट करे और बिकम मोर एजाइल, मोर इफेक्टिव, more interactive and more task oriented. So equity से फायदा क्या है? When you provide equity, there should be more growth, more task oriented work would be there, and people would be more satisfied and more happy in the organization. Next slide, please. Equal opportunity policy. An equal opportunity policy is a company's formal document that outlines their commitment to fair treatment of all employees regarding age, sex, race, disability, gender reassigned, religion, or beliefs. So, equal opportunity policy is company's formal document. Formal document ये है कि आप ये document करते हैं in writing that recommend करते हैं कि fair treatment किया जाएगा employees के साथ, whatever their age, जो भी उम्र के जिस भी हिस्से में है वो, जो भी sex है उनका, male, female और any other gender, रेस कौन सी है, गोरे हैं और पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, चाइनीज हैं, whatever race they are from. Disability means differently able हैं, maybe they need assistance, maybe they need hearing impairment, maybe they need something to maybe they are slightly blind or whatever this is.
तो हम उन सबको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे. जेंडर रीअसाइनमेंट, मे बी देयर थिंकिंग ऑफ देयर जेंडर रीअसाइनमेंट, और मे बी जो बहुत आजकल है कि अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसका. एंड रिलीजन और बिलीफ, इन सब चीजों को अगर हम बिलीव करते हैं तो और हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं, वी राइट इट डाउन इन द कंपनी पॉलिसी दैट जैसे आपको मैंने बताया कि हर जगह लिखा होता है जब जॉब पोस्ट आती है दैट वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स. इसका मतलब ये कि उनकी पॉलिसी में ये लिखा गया है कि दे आर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स, और वो डॉक्यूमेंटेड चीज है, वो कोई कहा नहीं गया हुआ खाली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Why an equal opportunity policy? The purpose of an equal opportunities policy is to provide transparency and accountability to your entire company about what constitutions constitutes fair treatment and what is considered discrimination, abuse and harassment. तो जब हम ये चीजें डॉक्यूमेंट कर देंगे तो वी वुड बी एबल एज अ कंपनी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, अब्यूज की बात होती है या हेरासमेंट की बात होती है, तो अगर हमारे पास उसकी पॉलिसी साइंड है, तो इट बिकम ईजियर फॉर द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय टू डील सच केसेस. कि अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे एरियाज में रह जाती हैं. तो वी नीड टू मेक थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट, एंड टू ब्रिंग दैट black and white thing in the policy, it is important that these things should be considered while making the policy document for HR और for equal opportunity policy का जब document आप बनाएं तो ये सब चीजों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि अगर कोई करेगा तो उसको आपको अकाउंटेबल करना होगा. उसको अकाउंटेबल करने के लिए यू नीड टू हैव द पॉलिसी. पॉलिसी वही होती है जो साइन की जाती है, जो डॉक्यूमेंटेड होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. तो पिछली वाली स्लाइड है. अच्छा सॉरी, ठीक है. सो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, कैन यू मूव ऑन प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नीचे वाली. यस. जब हम अभी बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन की. एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो व्हाट इज डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन? Direct discrimination refers to discrimination against a specific person because they possesses a protected characteristics listed above. कोई भी उसमें हो सकते हैं. Are perceived to have a protected characteristic or are associated with someone who does that. For example, if an employee was being harassed at lunch by other employees for following a specific religion, that would be direct discrimination. It is very simple to understand direct discrimination. Can be religion, can be language, can be gender, anything that you discriminate somebody for. मे बी रिलीजन की वजह से आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मे बी उसकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या फिर आप उसकी कोई भी ऐसी चीज है जो कि बहुत डिसेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, which is very easy to understand and which is very simple, that आप डायरेक्टली किसी को हरास कर रहे हैं या किसी के साथ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे वो डायरेक्टली हर्ट हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो दैट इज very clear direct discrimination. Now we'll talk about indirect discrimination. Indirect discrimination is when a policy, rule, or arrangement that applies to all employees discriminates against a certain group of people. For example, say your company has a healthy living initiative that includes team excursions with activities like
skiing, hiking और bowling. डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स के कोई ऐसी पॉलिसीज है, रूल्स हैं, अरेंजमेंट है दैट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज, डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल. लाइक अगर हम ऐसी चीज कर लेते हैं हेल्दी लिविंग के लिए, हम ऐसे एक्सप्रेशन करें जिसमें स्कीइंग है, हाइकिंग है, बोलिंग है, या हाइकिंग है जो हर कोई नहीं कर सकता, या स्कीइंग है जो हर कोई नहीं कर सकता, तो अगेन इट इज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कि वो लोग जो नहीं कर सकते उस उनको आप इसमें इन एक्सकर्शन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे. So when you have to plan something, some excursion trips for your employees, you have to see that everybody is involved with that. कोई भी जब एक्टिविटी एचआर करता है प्लान ऑन अ लार्जर लेवल, तो हमें ये देखना होता है कि everybody can be part of that. Like जब हम इस तरह की ये जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी, जिस तरह की करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो बहुत सारे लोग if they are differently able, they won't be able to join that excursion, excursion trips or activities. इसी तरह से इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ये भी हो सकता है कि आप आप लंच कर रहे हैं ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान in which mostly people are fasting, so when you are religiously you are discriminating them. So इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कीप an eye on that and keep a right tick towards that. तो ये बहुत छोटी चीज होती है लेकिन जिससे डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है जो आपको सामने नजर नहीं आ रही होती, बट वो एम्प्लॉयर को बहुत डिस्टर्ब करती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क. ओके, पीपल, वर्कप्लेस एंड मार्केट प्लेस. पीपल क्या है हमारे पास? एम्प्लॉय रिसोर्सेज ग्रुप, एम्प्लॉयज रिसोर्सेज ग्रुप, मेंटोरिंग. इसको हमने क्या करना होता है? इसको हमने रिटेन करना होता है. एम्प्लॉय को हमें रिटेन करना है. किस तरह से रिटेन करना है? एम्प्लॉय के रिसोर्स ग्रुप बना के उसकी मेंटोरिंग करके आपने उसे रिटेन करना है. वर्कप्लेस क्या? वर्कप्लेस में आप कैसे करेंगे? उसको ट्रेनिंग करेंगे, वर्कप्लेस प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट डाइवर्सिटी काउंसिल है, फिर डाइवर्सिटी एडवाइजरी काउंसिल है. वर्कप्लेस में आपने क्या करना है? एम्प्लॉय को डेवलप करना है. when जो भी लोग आते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, सबसे पहले आपने उनको रिटेन करना होता है. टू रिटेन आप एक ग्रुप बनाते हैं, आप उनकी मेंटोरिंग करते हैं, आप उसे रिटेन करना चाहते हैं. जब वो रिटेन हो जाता है फिर आप उसको डेवलप करते हैं. डेवलप किस तरह से करते हैं? ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करते हैं, वर्क प्लेस की प्लानिंग के थ्रू डेवलप करते हैं. फिर डिफरेंट एग्जेक्टिव डाइवर्सिटी काउंसिल है, डाइवर्सिटी एडवाइजरी काउंसिल है, उसके साथ उनको अटैच करते हैं और आप उनको डेवलप करते हैं. और फिर मार्केट प्लेस में क्या होता है? मार्केट में एम्प्लॉय ब्रांडिंग है, उसके अलावा फिलॉन्थ्रफी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, सप्लायर डाइवर्सिटी है टू अट्रैक्ट द मार्केट. अच्छा, अब इस चीज को इस तरह से समझना है कि डाइवर्स है चीजें, उनको हमने इंक्लूसिव कैसे बनाना है, कि उनकी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए. सबसे पहले आपके पास लोग आ गए, तो लोगों को रिटेन करने के लिए आपको मेंटोरिंग कैसी चाहिए? हु इज गोइंग टू मेंटोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल? So what kind of mentoring you are providing? What kind of employee groups you have? फिर उसी वर्कप्लेस को, उसी वर्कफोर्स को अपने डेवलप कैसे करना है फॉर योर वर्कप्लेस. तो आप उनको ट्रेनिंग कराएंगे, आप उनकी प्लानिंग करेंगे, डिफरेंट काउंसिल्स से उनको अटैच करेंगे टू डेवलप देम. एंड फिर मार्केट को कैसे अट्रैक्ट करना है? मार्केट को आपने अट्रैक्ट करना थ्रू एम्प्लॉय ब्रांडिंग. फिर आप कुछ फिलॉन्थ्रफी के काम करेंगे जिससे आपको इम्पोर्टेंस उसमें आपकी आती है. फिर इसके अलावा आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करेंगे डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. फिर सप्लायर की डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं आपने उसको सप्लाई करना है. डिफरेंट लोगों को जब आप सप्लाई करेंगे तो आपका डाइवर्सिटी, कोई भी चीज है जब आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसको आप डिफरेंट सप्लायर्स को देंगे टू अट्रैक्ट द मार्केट. you have to work on employee branding, philanthropy, strategic partnerships, and supplier diversity. This is a framework जिसमें आप डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की तरफ अपनी कंपनी को लेकर जाएंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हम किसके लिए करते हैं? एम्प्लॉय के लिए करते हैं. तो एम्प्लॉय को रिटेन करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे टू अट्रैक्ट दी मार्केट.
ओके, अभी नाउ कम टू डाइवर्सिटी में क्या है हमारे पास? कंपेयरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी क्या है? लीगल अवॉइड पेनल्टी। और इसको कौन क्या चीज डिराइव करती है? इसको बिजनेस एंड एनहांस परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा? अगर पेनल्टी अवॉइड कर रहे हैं, लीगल के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस एनहांस होगा, परफॉर्मेंस एनहांस होगी। रिमीडियल एंड इम्पोज्ड। कल्चर ऑफ चेंज। रिमीडियल जब इम्पोज कल्चर ऑफ चेंज जब लाएंगे तो आप रिमीडियल एंड इम्पोज कल्चर है, उसको जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास स्ट्रेटेजिक और इंटरनली ड्रिवन आएगा। अब इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये फ्रेमवर्क जो है ये इस तरह का है कि इसको मैं अगर आपको आसान तरीके से समझाऊंगी तो वुड बी इजियर फॉर यू कि डाइवर्सिटी को इंक्लूसिव आपने कैसे बनाना है। अगर आप मेंटोरिंग कर रहे हैं या अगर आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में चेंजेस हैं, तो आपका जो डेमोग्राफिक चेंज होगा, प्रोफाइल चेंज होगा, वो आपके कल्चर को चेंज करेगा। आपकी मेंटोरिंग अच्छी होगी तो वो मेंटोरिंग से एवरीबडी इज गोइंग टू बी, हर एक का जो है वो परफॉर्मेंस एंड टारगेट्स जो है वो अच्छे अचीव हो सकेंगे। इसी तरह जब हम विजिबल डिफरेंसेस लाएंगे तो वो किस चीज पे फोकस करेगा? विजिबिलिटी पे और इनविजिबल डिफरेंसेस के ऊपर काम करेगा। तो इस फ्रेमवर्क को इस तरह से हर एक के ऊपर हम फिट इन नहीं कर सकते, बट हम इन एरियाज को देख सकते हैं विच विल हेल्प कि अगर हम इन चीजों के ऊपर डाइवर्सिटी में काम कर रहे हैं कि वी आर अवॉइडिंग पेनल्टी, रिमीडियल पे काम कर रहे हैं, एंड विजिबल डिफरेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, और मेंटोरिंग कर रहे हैं, एंड मॉनेटरी मीन्स कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो क्या करेगा ये सारा? इससे हमारी इंक्लूजन कहाँ आएगी? इसमें सबके लिए इंक्लूजन होगी, कल्चरल चेंज आएगा, विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, और इनविजिबल डिफरेंसेस आएंगे जो आप देख नहीं सकते बट वुड बी देयर इन योर एम्प्लॉइज, एंड स्ट्रेटेजिक और इंटरनली ड्रिवन होंगे आपका कल्चर एंड कल्चर जो आप जो चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें चेंज आएगा। सो व्हाट हाउ आई वुड टेक दिस स्लाइड वुड बी दैट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन तो कंपैरिजन क्या हो सकता है? कंपैरिजन यही हो सकता है कि जब आप डाइवर्स कल्चर लेके आएंगे तो आपकी इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। जब आपका कल्चर इंक्लूसिव होगा, डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आएगी, तो ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन would become the key role, would take the key role to bring that improvement in the company. So this is how I take this framework. Next, please. Diversity and inclusion, challenges of diversity and inclusion. अच्छा, challenges क्या है हमारे पास? Challenges हैं lower cohesiveness, communication problems, stereotyping, mistrust and tension, unexamined assumptions. अच्छा, इन चैलेंजेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज हमने बहुत देर पढ़ा है, तो लेट्स डिस्कस द चैलेंजेस। So let's have a group discussion on these challenges. हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में क्या चैलेंज पेश, कम्युनिकेशन का क्या चैलेंज होता है? लेट्स डिस्कस ऑन दैट। Let's discuss this slide. This is a very simple slide of challenges. So let's discuss on that. That first, I'll start with communication problems. अगर challenge है to have a diverse and inclusive culture, तो communication की क्या problems हो सकती हैं? What would be the role of a communication? Let's discuss on this first. We'll take about 10 minutes to do this discussion. अच्छा, डाइवर्सिटी में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो शायद लोग इसको समझते ही नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते। नॉर्मली कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें कि समटाइम ये भी होता है कि एचआर के इनिशिएटिव होते हैं, वो एचआर समझता है कि वो एचआर नहीं लेने हैं और उसने दूसरे डिपार्टमेंट को उसमें इंक्लूड भी नहीं करना। हालांकि हम खुद इवेंजलिस्ट हैं इंक्लूजन के,
चेंज एजेंट भी हम है ना देखा जाए तो वो, लेकिन हम लोग ऐसे इनिशिएटिव खुद में नहीं लेते, बल्कि समटाइम मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है एचआर डिस्करेज करता है दूसरे डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटी में स्टेक होल्डर बने या एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो आप लोग भी फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मुझे बताएं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है कि एचआर ही स्टेक होल्डर है, मेन की स्टेक होल्डर है, और वो आप दूसरे डिपार्टमेंट को इंक्लूड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, प्लानिंग के एक्टिविटीज की प्लानिंग के अंदर, एक्टिविटीज के बाकी चीज़ों के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हम इसमें बात कर सकते हैं या सिर्फ L&D या लर्निंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है वो, या जो कि और डिपार्टमेंट है एचआर वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से ज़रा शेयर करें। जी एहतशाम, मुझे बताइएगा, आप फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल क्या कल्चर है? सर फार्मास्यूटिकल में हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, मल्टीपल लेवल्स, लाइक प्लांट बेस्ड एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट ऑफिस बेस्ड एक्टिविटीज, मार्केटिंग बेस्ड एक्टिविटीज। तो हमारा जो सबसे मेन इवेंट आता है एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस। एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस में लाइक हमारे पास जो हेड काउंट 3000 का, वो अलाइड डिपार्टमेंट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिस, तो उसमें हर डिपार्टमेंट का इक्वल शेयर्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इक्वल ईच एंड एवरी लेवल के ऊपर लोग इंगेज कर रहे होते हैं, लाइक स्टेज एक्टिविटीज़ हैं, परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, अचीवमेंट्स शेयरिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स डिवीजनल लेवल जो चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, कैलेंडर ईयर्स की अचीवमेंट्स शेयर हो रही होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर लेवल के ऊपर चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे पास, तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अदर देन डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस का, वो आप फर्दर शेयर। थैंक यू। अच्छा, आप एहतशाम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, तो आप एचआर में हैं ना, तो एचआर के अंदर आप खुद ही प्लान करते हैं सारे के सारे नो नो इवेंट? नो सर, हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट, लाइक सप्लाई चेन से अगर हमने गिफ्टिंग्स वगैरह जो भी वो सप्लाई चेन को हम लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ गिफ्टिंग हमें रिक्वायर्ड्स होंगी इस इवेंट को कवर करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो होंगे वो जो आपको लाइक प्लेस प्रोवाइड कर रहे होंगे, एंटरटेनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले अपनी ब्रांडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब कलेक्टिव इवेंट्स इस तरह के आते हैं हमारे पास, एक क्वार्टर बेस पे इवेंट्स आता है, उसके अंदर भी कॉर्पोरेट ऑफिस और जो प्लांट बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन ये है, मैनेजर एंड अबव उसको हम कवर कर रहे होते हैं अप टू टॉप मैनेजमेंट तक। तो उसमें भी तमाम डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं, और वो एचआर में प्लानिंग फेज में भी होते हैं, और एग्जीक्यूशन फेज में भी, और डिलीवरी फेज में। सही सही। नहीं, अच्छा है कि आप उनको प्लानिंग, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप उनकी प्लानिंग फेज में भी रखते हैं, और जी जब सर। आपको एग्जीक्यूट करनी होती है तब भी आप उनको इन करते हैं इंक्लूड ना? यस सर, यस। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त हो गया ना। तो यही होना चाहिए कि, लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि वो बाकी डिपार्टमेंट को सिर्फ बताया जाता है कि आपने ये करना है और आपने हमारे साथ शामिल होना है ना प्लानिंग में, और वो जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया जाता, बस बता दिया जाता है कि ये आज मैंगो पार्टी है, आज ये डे है, आज ये डे है, आप लोग आ जाएं। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा गया है ना। ठीक है, लेकिन आपने अच्छा है बताया कि सब लोगों को आप इंक्लूड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, और सब लोगों को इसमें आप लेते हैं ट्रस्ट के अंदर ना। यस सर। और इवन सर जब कोई भी इवेंट्स होता है, उसकी जो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं और क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, उसके अंदर भी हमारे
जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर हम फॉर एग्जांपल मल्टीपल डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को गिफ्टिंग वगैरह ये वो या अचीवमेंट्स उनसे शेयर हो रही होती हैं, तो मतलब हर डिपार्टमेंट के हेड को कोशिश करते हैं कि वो स्टेज पे आएँ और उसको अपने रिमार्क्स भी दें और इसके बारे में अपना फीडबैक भी शेयर करें और गिफ्ट्स वगैरह जो है एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करें। जबरदस्त, ग्रेट। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो के पर्सपेक्टिव से कोई कहीं से हर्डल आती है? दूसरा चेक सर कर लेते हर्डल ना, सॉरी सर हर्डल्स आती हैं लाइक जो ये मैंने बताए जो नेशनल लेवल्स पे सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, जी कुछ जी हमारी सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, अचीवमेंट्स हो रही होती हैं, या अचीवर्स कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वो इंटरनेशनली विजिट्स, तो उसमें जो पहले ये था सेल्स और मार्केटिंग के जो अचीवर्स होते थे जस्ट वो उसको अटेन करते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जो अलाइड डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे वो कभी भी उसमें मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा। फ्रॉम आई एम वर्किंग विद द कंपनी फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 years, लेकिन लास्ट ईयर ये एक चेंज आया है कि जो अलाइड डिपार्टमेंट से उन्होंने कहा नो इशू, बारिश का बेशक पहला कतरा है, हर डिवीजन से 2 लोगों को पिक किया गया है। अब वो डिवीजनल हेड की तरफ से पिक किया गया था, मे बी उसमें भी बायसनेस का एलिमेंट थोड़ा बहुत था, लोगों ने उसमें कुछ बातचीत की, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले 2 जाएंगे, उसके बाद 4 जाएंगे, फिर 6 जाएंगे, लेकिन एक इनिशिएटिव तो लिया ना, उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करो। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, इसमें अब दूसरी चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बात की स्टीरियोटाइपिंग में आ जाता है ये कि एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग में क्या चैलेंजेस एचआर डिपार्टमेंट को आता है टू मेक द कल्चर मोर डाइवर्स? सो व्हाट डू यू थिंक इज स्टीरियोटाइप? मैम स्टीरियोटाइपिंग में आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की एक अचीवमेंट को लेके या उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, इवन के फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई टारगेट्स अचीव किए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो सेल्स मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग या प्रमोशंस दी जाती हैं। उसके पीछे जो कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं अलाइड डिपार्टमेंट्स की, आई थिंक उसको इतना ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता, तो वो मैं समझता हूँ कि उसको प्रमोट करने की कलेक्टिव एफर्ट के जरिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। यू थिंक कि स्टीरियोटाइप ये है कि वो जो सामने आते हैं सिर्फ उन्हीं को अहमियत दी जाती है, बाकी लोगों की वो अहमियत नहीं होती या उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। कोई एक अकेला शख्स तो कुछ नहीं कलेक्टिव, कर सकता, हाँ मैम ये कलेक्टिव कलेक्टिव एफर्ट होती एफर्ट है। है। बट जो इम्पोर्टेंट जो उसकी हम ये कह सकते हैं कि जो उसका रिवॉर्ड है वो जो मेन सामने लोग होते हैं उनको मिल जाता है। यस यस यस। अच्छा, ठीक है, एक ये चीज होगी। दूसरी एक चीज जो मैं आई वांट टू पीपल टू डिस्कस इज मिसट्रस्ट एंड टेंशन। मिसट्रस्ट हमें कैसे डाइवर्सिटी से दूर करती है? मिसट्रस्ट तो देखिए हमारा बड़ा कॉमन एक इशू है कि वी डोंट ट्रस्ट आर टीम। मोस्टली हमारे कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली तो कहते हैं हम सेल्फ ड्रिवन है, लेकिन सेल्फ ड्रिवन से ज्यादा वो टीम प्लेयर्स नहीं होते। तो उसमें क्या मिसट्रस्ट उसका एक हिस्सा बन सकता है, उसका एक इशू या रीजन बन सकता है उसमें? मैम इसमें अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं तो जो आप मिसट्रस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज या बहुत सा ऐसा सेंसिटिव डाटा जो या ऐसी जो रिजल्ट्स जो फोरकास्ट किए जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, उसके अंदर मैंने फील किया है आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बनाया जाता। उसकी रीजंस ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल वो चाह रहे हैं ये मे बी हमारे पास जस्ट लाइक का प्रोबेशन पीरियड के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये हमारी स्ट्रेटजीज और हमारी चीज़ों को एक्वायर करेगा, ग्रैप अप करेगा, और उसके बाद ये दोबारा जो अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स डायरेक्टर लेवल के ऊपर और मार्केटिंग हेड्स लेवल के ऊपर हैं, जिसमें कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया 3 to 6 months के लिए, उसके बाद वो
बैक कर गए। इवन हमारे पास एक सीएफओ की एग्जांपल है, हमारे कंपेटिटर थे लाहौर में, सीएफओ ने हमें ज्वाइन किया फॉर 6 मंथ, और उसके बाद में भी आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में ये फील किया गया कि ये इंटेंशनली तौर पे इसको यहाँ पे डिस्पैच किया गया था, और उसके बाद सारी चीजें स्ट्रेटजी आपका जो 2025 का विजन है उसमें जो आप करने जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कॉस्टिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, वो सारी चीजें उसने एक्वायर की। उसके बाद वो आफ्टर 6 मंथ वो बैक कर गया उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ से वो स्विच करके आया था, वापस चला गया वो। वापस चले गए। तो इस पे है कंसर्न एट टॉप मैनेजमेंट के, अगर कोई बंदा उनको ये फील होता है कि ये मेरी टीम में मिसफिट हो रहा है या मैं उसको स्पेस नहीं देते, तो ये एक एलिमेंट है मिसट्रस्ट का। तो ये मिसट्रस्ट में आता है। बिल्कुल सही है, सीधा मिसट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिससे हम इफेक्ट होती है हमारी, अगर हम बहुत ज्यादा डाइवर्स बनाना भी चाह रहे हैं, लेकिन दिस इज वन थिंग विच अफेक्ट्स अस। फिर अनएक्सपेक्टेड अजम्पशन, इस पे क्या आपका टेक है? अनएक्सपेक्टेड अजम्पशंस तो मेरे ख्याल इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, जो बहुत सारे हमारे डिसीजन जो है वो अजम्पशंस पे चल रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? एनीवन हु वांट टू टॉक ऑन दिस? assumptions के ऊपर क्या आपका टेक है? अच्छा हाँ, ये आमतौर पे होता है कि assumption के ऊपर हम अपनी जो assumptions है उनके ऊपर बहुत बड़ी चीजें डिसाइड करके बैठ जाते हैं। ऐसा होता है, और चीजों को टेस्ट नहीं करते, और उसके बगैर ही फिर हम assumption के ऊपर ही सब कुछ कर लेते हैं, डिसीजन भी कर लेते हैं सम टाइम, और उनको हमने। बहुत सारे, हाँ, डिसीजन भी हमारे assumptions पे हो जाते हैं, और जिसका जी नुकसान हमें बाद में होता है। बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, बहुत सी जगहों में ऐसा होता है ना। और assumptions हम्म की वजह से हम कई दफा इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे होते, कोई नई चीज भी नहीं कर रहे होते, कि खुद ही से yes, ज्यूम करके बैठ जाते हैं कि ऐसा होगा ना। ये तो ये ये भी ऐसे जरूरी है होगा, कि अगर ये करेंगे तो उसमें, और उसमें कई दफा उसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, वो सारी assumptions होती हैं। और बहुत हम्म सारे डिसीजन, बहुत सारी कंपनीज जो होते हैं वो assumptions पे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो इफेक्ट कर रही होती है। आपकी ग्रोथ तभी होगी ना जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट ही नहीं है, और आप मतलब assumptions, यही होता है ना, सुनी सुनाई बात को assumption कहते हैं ना, जैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को तो हम assumption नहीं कहते, या प्रोबेबिलिटी भी assumption होती है। जी जी बिल्कुल सही है। So this is my question: is probability is an assumption, or it is something which is important? हेलो। जी जी यस प्लीज। हाँ जी। जी सर। सर, probability is not assumption, probability is separate and assumptions is separate. assumptions की बेस पे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर एग्जांपल एचआर एक एक्टिविटी प्लान करता है विदाउट प्रूविंग एनी बजट। उसके अंदर बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और वो डिस्कस करते हैं अपने डिपार्टमेंट लेवल पे, डिवीजन लेवल से गो हेड लेके जब वो सीएफओ और एमडी लेवल के ऊपर जाते हैं तो उसको अगर बजट कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं आप इसको दोबारा से वर्किंग करके लेके आए, तो वो एक पिंग पोंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे साथ एक लास्ट एक एक्टिविटीज हम लोगों ने प्लान की थी। हमारे पास कुछ जो वर्कर्स की जो कैटेगरीज होती हैं, परमानेंट, टेम्परेरी, डेली वेज स्टाफ, उसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के बाद उनकी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो चेंज करते थे। तो उसके अंदर बचत मैंने 3 दफा एक एक्टिविटी प्लान की है। आई थिंक 3 टाइम इज अनफ टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू। और एक प्रीवियस प्रैक्टिस आपके ऑर्गेनाइजेशंस में चलती आ रही है। बेशक टॉप लेवल पे ऊपर कुछ जो हेड्स लेवल पे एक दो लोग चेंज हुए हैं, तो वो उसको कहते हैं जी हाँ ठीक है, इसमें आप वर्किंग करके लाएं, आप इसमें ये देखें कि इस पे मंथली इम्पैक्ट क्या आएगा, सैलरीज का इम्पैक्ट क्या आएगा, वर्क ओवर टाइम का इम्पैक्ट क्या आएगा, और बेनिफिट्स का इम्पैक्ट क्या आएगा। मतलब आपने 3 दफा एक चीज की वर्किंग करके दे दी है, और उसके बाद वो फिर टॉप मैनेजमेंट को पुट करते हैं और वो उस पर कहते हैं हाँ ठीक है, इसको
करते हैं, देखते हैं, तो ये वाली चीज़ सारी assumptions पे आ जाती है कि आप करने भी जा रहे हैं, आपकी इंटेंशंस भी है, लेकिन ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स आप उस चीज़ को 100% मेक श्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये तो डिलेज में आ जाता है ना। Um, okay. Now go to the next slide. This is diversity and inclusion strategy. Attract and recruit from a large and diverse pool of talent. जैसे हमने भी पहले diverse recruitment की बात की, उसमें आ जाता है. Then secure and inclusive workplace culture. This we have discussed कि workplace को हमने कैसे inclusive बनाना है. Then develop a diverse pool of talent. A diverse pool of talent चाहिए जिसमें हमारे पास जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जॉब की, वो तो रिक्वायरमेंट है, उसके साथ डाइवर्सिटी को कैसे लेकर आना है, दिस इज वी हैव डिस्कस. एंड लीव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द मार्केट प्लेस इन पार्टनरशिप विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटीज. तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि उसको अपने मार्केट को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये उसमें आपको हेल्प करता है. एंड मैनेजमेंट अवेयरनेस, कमिटमेंट एंड बिहेवियर. तो स्ट्रैटेजी के लिए मैनेजमेंट की अवेयरनेस किन किन चीजों के लिए चाहिए, क्या उनकी कमिटमेंट चाहिए, क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए, कि ये सारी चीजें आप कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, अट्रैक्ट एंड रिक्रूट फ्रॉम लार्ज एंड डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट. लार्ज एंड डाइवर्स पहले आपके पास होगा तो आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे. देन सिक्योर एंड इंक्लूसिव वर्कप्लेस कल्चर. और फिर आपकी कमिटमेंट कितनी है कि यू डेवलप अ डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट. टैलेंट के लिए तो आपने हायर कर लिया, उसको आप डेवलप कैसे करें, ट्रेनिंग कितनी करा रहे हैं, किन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप एक डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट जो उसको आप डेवलप करें. और फिर आप इसको मार्केट को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन सी किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, कस्टमर्स सप्लायर्स के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, और उनकी कम्युनिटीज के साथ आपकी क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किस तरह से आप उनके साथ काम करें to make, this is a strategy to make your culture diverse, make your company diverse and inclusive. Next slide, please. So, जी मेरे ख्याल से आपकी तरफ से फिर ये हो गई थी हाँ डिस्कनेक्शन. जी, अभी मैं ख्याल अभी आवाज आ रही है. जी जी, यू आर ऑडिबल टू ऑल ऑफ अस राइट नाउ. अच्छा ठीक है. So diversity and inclusion goals for diversity and inclusion हमारे पास क्या है. diverse workforce diversity हमने डिस्कस कर लिया. recruitment from a diverse qualified group of potential applicants to source high performance.
डाइवर्स रिक्रूटमेंट का हमें क्या फायदा होगा? वर्क प्लेस इंक्लूजन जो हमने सारा डिस्कस किया है कि आपकी वर्क प्लेस में हाउ कैन यू मेक इट मोर इंक्लूसिव, क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करनी है, and cultivate a culture that sorry मुझे इसमें slide भी नहीं नजर आई, that encourages collaboration, flexibility, fairness for all to contribute full potential. ये वही जैसे मैंने आपसे बात की, जब workplace inclusion की बात आती है तो हम HR agility की बात करते हैं, which is very true that कि क्या collaboration हम करेंगे, क्या flexibilities हम provide करेंगे कि हमारी workplace जो है वो inclusive बनेगी. Then sustainable कैसे करना है? Develop structures and strategies to give leaders ability to manage diversity, be accountable, measure results, reframe approaches. Result accountability and transparency की जैसे हमने बात की है, जब हमारे पास documented होती हैं चीजें तो आप accountable भी कर सकते हैं अगले को, और accountability भी आप कर सकते हैं ensure, और diversity को भी ensure कर सकते हैं. तो diverse culture को maintain करने के लिए you need to have documented everything to make it sustainable. क्योंकि सिर्फ बातें करके हम sustain नहीं कर सकते. We need to have things in order, and to keep the things in order we need to have proper documented policies and procedures so that we can make that sustainable. That is not for only a short period of time. And policies, as you must have discussed in the policies and procedures session, that policies are to be reviewed after 2 to 3 years. So वो भी कोई ऐसे नहीं होती कि जैसे पत्थर पे लकीर हो. So make things sustainable, we have to keep working on policies and procedures. Next, please. So what are some benefits of workplace diversity and inclusion? Improved understanding of those you work for, with, and around, better performance outcomes, boost employee morale, create a work environment that allows everyone to reach their full potential, increase employee productivity, improved member relations, provides multiple perspectives on problem solving, increase retention rates, and reduce complaints. So these are the things, जब ये सब चीजें हम provide करेंगे तो automatically environment आपका और culture आपका ऐसा बन जाएगा कि these things become easier and available to all your employees. So performance ही better होगी. If the performance is better, of course, there would be more business development. जो भी हम काम करें, then we have to develop the business, and when the business is developing, there would be more retention. अब जब retention अच्छी होगी तो आप अपने culture को और diverse and inclusive बनाने की कोशिश भी करेंगे और बनता भी चला जाएगा, और इसकी वजह से आपकी complaints बहुत reduce हो जाएंगी, और जो employee को regular morale उनका boost up रहेगा. Next, please. Diversity and inclusion maturity matrix. अब इसको मैं से देखते हैं कि level 1 में basic आपका क्या है. Diversity and inclusion in on 3 agenda for discussion, but no concrete plans are in place to define or achieve desired outcomes beyond those requirements by regulation. The operating group or business will put additional measures in place to respond to any problem. Level 1 क्या है? जो basic level के ऊपर जब आप काम करें diversity and inclusion में, is on 3 agenda for discussion, but no concrete plan. कोई plan नहीं है आपके पास, and plan are in place. कोई plan नहीं है जिसको आप define कर सकें to achieve desired outcomes beyond those requirements, but regulation. The operating group or business will put additional measures in place to respond to any problems. So हम basic level पे अगर बात करें तो हम तैयार हैं उसको करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो agenda है उस agenda हमने बना लिया, लेकिन कोई plan, concrete plan नहीं है to achieve that. Level 2 क्या है? That is awareness. Diversity is increasingly recognized as a business benefit, and an inclusive culture is acknowledged as key to success. Diversity and inclusion initiatives are deployed at a local level and monitored to support continuous improvement.
जब आप अवेयर कर देते हैं, पहले आपने एक बेसिक लेवल का शुरू किया, उसके बाद आपने लेवल 2 में अवेयरनेस डाली है। अवेयरनेस कैसे डाली है कि उसको आपने रिकग्नाइज करना शुरू किया है एज अ बिजनेस बेनिफिट। डाइवर्स कल्चर की जब हम बात करें तो डाइवर्सिटी में हमने कितनी चीजों की बात की है, तो डाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया हमने उस चीज को एज अ बिजनेस बेनिफिट, कि उससे आपके बिजनेस को बेनिफिट होगा और वो डेवलप होगा। एंड एन इंक्लूसिव कल्चर इज एक्नॉलेज कि अगर आपने डाइवर्स एम्प्लॉयज को रखा है तो उस जो कल्चर डेवलप होगा उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है एज अ की टू सक्सेस। और फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स आर डिप्लॉयड एट अ लोकल लेवल पे, हमने उसको डिप्लॉय कर दिया है एंड मॉनिटर्ड एंड सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो कंटिन्यूअसली उस पर जब आप मॉनिटरिंग करेंगे तो इट विल ब्रिंग। लेवल 3 क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। लेवल 1 में अवेयरनेस, लेवल 1 में बेसिक था, फिर अवेयरनेस, एंड थर्ड लेवल हमारा क्या? अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। Management recognize the business benefits of diversity and can demonstrate that it is implementing diversity inclusion strategies designed to create an inclusive work environment. तो सबसे पहले आपने बेसिक लेवल पे एक एजेंडा बनाया कि आपने करना है, उसके बाद आपने उसकी अवेयरनेस जनरेट की, और फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पे तब आए जब मैनेजमेंट ने इस चीज को रिकग्नाइज कर लिया कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन से आप डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होगी। तो जब उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है लेवल 3 पे अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन को, तो फिर उसके ऊपर आपने स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी है टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वर्कफोर्स। फोर्थ लेवल क्या है? इंटीग्रेशन। सो पहले बेसिक लेवल के ऊपर हमारे पास आइडिया था, फिर अवेयरनेस जनरेट की, उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन उसी करने की कोशिश की, फिर उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कैसे किया है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज फुली इंटीग्रेटेड इनटू डे-to-day activities. Management is committed to creating an environment that supports diversity and inclusion and encourages the right behaviors. Diversity and inclusion initiatives reflects local needs and support the success of the operating group or businesses. So पहले आपने बेसिक एक आइडिया जनरेट किया, फिर आपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की अवेयरनेस क्रिएट की कि दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड देन यू डिड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, कि उसको अंडरस्टैंड किया और उसको अप्लाई करने की कोशिश की, और फिर उसको इंटीग्रेट किया इनटू योर डे टू डे एक्टिविटीज। जब आपकी वो डे टू डे एक्टिविटीज में तब इंटीग्रेट हुआ जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि दिस विल ब्रिंग benefit to your business. So when you are ready that this thing will create more business, to bring more business to the company, फिर आप उसको integrate करते हैं to day to day management activities so that it bring more business and it create जो needs हैं लोगों की वो पूरी करें। Last is sustainable. Diversity and inclusion is how things are done. It's part of business as usual and embedded in day-to-day activities. Diversity and inclusion, diverse strategy. The impact on business performance is clear, and diversity and inclusion enhance competitive advantages. फिर इसको आपने सस्टेनेबल जब बना दिया, सस्टेनेबल कब बन गया? जब वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट बन गया। वो सब चीजें हमने डाइवर्सिटी की डिस्कस की हैं, एज की हैं, रिलीजन की हैं, डिफरेंटली एबल लोगों की हैं, जेंडर की हैं, वो सब चीजें जब आपने एक्सेप्ट की हैं, उनको अप्लाई किया है, फिर उनको अंडरस्टैंड किया है, इंटीग्रेट किया है, तो फाइनली उसको हमने सस्टेनेबल बनाया। सस्टेनेबल कैसे बनाना है? पार्ट ऑफ योर एवरीडे वर्क रूटीन में जब वो आ जाएगा तो वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ चला जाएगा और वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। And this will impact on business performance in clear and diversity and inclusion enhance competitive advantages. तो उससे competitive advantages आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। Next slide, please. Equality is not a concept. It is not something we should be striving for. It is necessary. It's essential for survival. Equality की बात हो रही है, equity की बात नहीं हो रही। So equality is not a concept. It is not something we should be striving for. It is necessary and it is essential to survive. So ये essential है, necessary है, ये आपकी choice नहीं हो सकती. This is what we have to do. Next slide, please. Diversity, equality and inclusion beyond the workspace.
So creating an equitable and inclusive workplace is not limited to the physical workspace. It is important to consider how DE&I initiatives can be extended beyond the office walls to ensure that employees feel valued and respected. So ये चीजें सिर्फ हमने workspace पे नहीं करनी, workplace पे नहीं करनी, ये आपने generally इसको डालना है, not only for the workplace, for along with the other activities which you are doing for diversity and inclusion. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी डे टू डे रूटीन में इस चीज को लेकर आए. जो HR जो आउट ऑफ ऑफिस जो इनिशिएटिव्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, या इसके अलावा आपकी कोई ट्रिप्स हैं, कोई एक्सकर्शंस हैं, तो उसमें भी इस चीज को हमने लेकर आना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The role of technology in DE&I. Technology has become an integral part of creating a more equitable workplace. It can be used to ensure that everyone is given equal opportunity and access to resources. Equal opportunity and equal opportunity सबको मिल रही है, और resources कैसे इसको हम use कर सकते हैं? Somebody wants to have a flexible time, somebody wants to have a work from home facility, and this is how you can make your culture more diverse and inclusive through equity. Next slide, please. Bring it all together. Action items क्या आपके लीजिए? Identify DE&I goals. Establish measurable objectives to track progress and success of diversity, equity, and inclusion initiatives. Create action plans, develop strategies to achieve DE&I goals and objectives, and implement initiatives, put plan into action and track progress. By bringing together diversity, equality, and inclusion goals, action plans, and implementation initiatives, organizations can create a comprehensive approach to promoting equity and equal opportunity. So this was today's discussion, and this slide is concluding, and it says that first you have to make the goal. सबसे पहले आपका goal क्या है? आपको diversity and inclusion company में लेकर आना है, या ऑलरेडी है तो उसको इम्प्रूव करना है. तो व्हाट आर द वेज कि उसको आपने अप्लाई कर, जैसे अभी हमने इस पर डिस्कस किया कि बेसिक लेवल पे आपका गोल है, फिर उसके बाद आप उसकी अवेयरनेस है, फिर उसकी एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, फिर उसकी इंटीग्रेशन है, और फिर सस्टेनेबिलिटी है. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस इन विच यू कैन ब्रिंग टुगेदर all this in an action plan. So identify the goals and then create action plans and then implement initiatives. When you implement initiatives, there would be a change in the performance of the employees in the company, which in return bring more business to the company, and there will be more business development. So this is how diversity and inclusion help us. Next slide. I think this is the end concluding slide for us. जी बिल्कुल, ये लास्ट स्लाइड है जो हमने भी डिस्कस की है, जिसमें ऑलमोस्ट कंक्लूड किया है डाइवर्सिटी को, और उसके ऊपर जो इनिशिएटिव लेने हैं, जो एक्शन लेना है, उस हवाले से डिस्कस किया गया कि एक्शनेबल आइटम्स कौन कौन सी हैं इसके ऊपर ना. So any questions on this? We have 5-10 minutes to take questions. जी, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई अपनी वो बात शेयर करना चाहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो सब लोगों के साथ कर सकती हैं, क्योंकि सब लोगों की लर्निंग हो जाएगी ना, कि डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं, फार्मास्यूटिकल से भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग से भी हैं. तो सीखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर इदारे की ज़रूरत अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट है, हर सेक्टर का कल्चर डिफरेंट होता है, उसकी नीड डिफरेंट होती है. राइट, IT सॉफ्टवेयर हाउसेज में लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता है, इवन नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, जबकि और जैसे कि फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्शन वाला प्लांट है 24/7 जब चल रहा होता है, तो तब भी फिर जॉब रोटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, सब चीज़ें चल रही होती हैं. तो वहाँ पे फिर हमें बड़े इश्यूज आते हैं डाइवर्सिटी के, इंक्लूजन के,
और अगर तो हम जिस रीजन में मैं इस वक्त बैठा हूँ, इस्लामाबाद रीजन में, तो यहाँ पे पंजाब और केपी के रीजन ऐसा है कि जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग पर्सन और पश्तो स्पीकिंग लोगों का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और अक्सर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल के अंदर, या और भी यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कोका कोला का प्लांट है, पेप्सी का प्लांट है, या और इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी। उसके अलावा इधर चले गए आप हतार वाली साइड पे, वहाँ पे हमने बड़ी चीज़ों को, बहुत से कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का मौका मिला अपने अपने जॉब के दौरान में, जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोगों का और पश्तो स्पीकिंग लोगों का कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता था। अब हज़ारा एक एरिया है जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे जो पश्तो स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते थे, हमें उनको डिसॉल्व करना पड़ता था, उनके कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करना पड़ता था, डाइल्यूट करना पड़ता था, उन लोगों से बात करके डी एस्केलेट करना पड़ता था उनकी चीज़ों को ना। वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे किसी एक इशू पे। तो ऐसे बड़े एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, उनको डील करने का भी इत्तेफाक हुआ। जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को फैसिलिटेट किया आज की इस कंडीशन में भी, कि जब हमें वो जो बैंडविड्थ है पूरी इतनी अच्छी मिल नहीं रही थी। और बहरहाल आप सब लोगों को, हाँ, आई होप लोगों को समझ आ गया होगा। बीच जी में जी बहुत दफा ब्रेक हुआ हमारा आज सेशन, जी बट अपॉलॉजीज ऑन दैट, क्योंकि आज हम खुद कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर ये 1-2 दिन में ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी ना, नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँगा। उसके अलावा मैं आपके साथ ये जो ट्रेनिंग मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, ये भी शेयर कर लूँगा। रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं नज़र आएगी ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम इसको फिर आज कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में आप सब लोगों से मुलाकात होती है। टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।